Good morning, class. So, yesterday we studied about the topic element, and we saw that element are basically three type. One is a metal, non-metal, and the third one is a metalloids. Okay. So, metal, the property of the metal I already discussed with you in the last class, and non-metal, ki how could we identify the metal and the non-metal according to their physical appearance. Okay. So, I already insist you that these are the five major differences which should be in always in your mind, that metals are shining, metals are ductile, malleable, good conductor of heat and electricity, and they are sonorous. Okay, and I already discussed the what are the meaning of these particular words. Okay, so now today we are discussing some exception. ठीक है, which is not come in these category, and we are going to discuss about the metalloid and the compounds. ठीक है, now when we are discussing about these property of the metal, ठीक है, there are some metal who are not coming in this criteria. ठीक है, so you have to know about the name of this, like when we are saying the metal are very strong. ठीक है, the metal are generally very strong, but sodium is the exception here. ठीक है, तो sodium, you know that sodium is very soft, even that much soft that you can cut the sodium with the knife. ठीक है, तो sodium is the exception here. तो generally we say that the metals are solid in the form. So mercury is the exception here. Mercury क्या है? That is liquid in nature. So this is the exception here. Okay, when we are saying basically non-metals क्या होता है, they are not shining, they are not good conductor of heat and electricity. So here two exceptions are also there. One is a diamond and another one is a graphite. ठीक है, तो diamond, as you know, this is a non-metal, is a form of a carbon, but it's very shining. You know it na, diamond, it's very shining, but it's a allotropic form of a carbon. And when we say that basically non-metals are not passing current, so graphite is also another form of a carbon. Graphite is a very good conductor. It's a very good conductor. We are using in so many time in the laboratory also. So this is the exception here. Okay, so these are the exception which you should know about, that these are not following these criteria. And here it is also written, if you will see, that metals are gold, silver, copper, iron, sodium, potassium, etc. Mercury is only the metal which is liquid at room temperature. So you can see that, and example of, यहाँ पे भी देख सकते हो, example of non metals are hydrogen oxide, oxygen, iodine है, carbon है, bromine है, chlorine है. These are the non metal, and some element have intermediate properties. अब यहाँ पे मैं बात करने जा रही हूँ the third one, that is called as the metalloids. ठीक है, now what are metalloids? ठीक है, तो metalloids, it's like there are very some metals who are showing some properties of a metal, and who are showing, who are behaving like showing some property of a non-metal. ठीक है, so this kind of metal, or which show the property of a metal as well as of a non-metal, they are called as the metalloids. ठीक है, so metalloids में आपके कौन कौन से आ जाएंगे, like बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है. These are the example of a metalloid. So what are the metalloids? Metalloids are those who have a property of a metal and a non-metal. ठीक है, so these जो उनकी properties होंगी, they are between the properties of a metal and non-metal, and it's most very important. ठीक है, so you can write in the left side of your copy that element have intermediate property between those metal and non-metal, they are called as metalloids. So what are the example of metalloids? The example of metalloids are boron, silver and germanium. ठीक है, so you should know about that. Fine. Now when we are starting the another one topic, that is, अच्छा यहाँ पे some key facts are there. You can see that, okay, the number of element known at the present are more than 100. तो that is 118, which is in your periodic table. ठीक है, तो majority of the element are solid, as I told you. Metal ज़्यादा है, non-metals are very few. 11 element are in the gaseous state at the room temperature. Like जैसे कि आपका ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, they are in the room temperature में क्या है, आपकी gaseous form पे हैं. 2 elements are in the liquid फॉर्म. तो कौन कौन से हैं? वन इज अ ब्रोमीन एंड अनदर वन इज अ मर्करी. तो मर्करी तो यू नो इट कि इट इज अ मेटल, एंड ब्रोमीन इज अ नॉन मेटल. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए. लाइक एलिमेंट है जो गैलियम है, सीजियम है, बिफोर लिक्विड एट अ टेम्परेचर स्लाइटली अबव द रूम टेम्परेचर. ठीक है, अगर रूम टेम्परेचर लाइक 25 डिग्री सेंटीग्रेड वी आर कंसिडरिंग, अगर थोड़ा सा बढ़ता है तो ये भी जो एलिमेंट है लाइक गैलियम है और आपका
गैलियम है सीजियम है, तो ये भी आपके क्या आ जाते हैं, लिक्विड की स्टेट पे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके कुछ की फैक्ट्स हैं, यू शुड नो अबाउट इट। ओके, नाउ व्हाट इज अ कंपाउंड? कंपाउंड इट मीन्स व्हेन टू एंड मोर देन टू एलिमेंट्स आर कंबाइनिंग, ठीक है, कंबाइनिंग केमिकली, ठीक है। हियर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मिक्सचर्स, ठीक है। व्हेन द टू एंड द मोर देन टू एलिमेंट्स आर कंबाइनिंग टू ईच अदर, दे आर फॉर्मिंग कंपाउंड्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल से हाइड्रोजन, ठीक है, एंड इफ आई विल से ऑक्सीजन, ठीक है। अब इनका जो कॉम्बिनेशन होगा वो केमिकली होना चाहिए एंड इट फॉर्म्स कंपाउंड लाइक H2O, ठीक है, जिसमें हम कहते हैं 2:8, ठीक है। अगर ये इतने में मिले हैं देन ओनली द वाटर विल फॉर्म, अदरवाइज फिर वाटर फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कंपाउंड्स क्या होंगे, केमिकली कंबाइंड होते हैं एंड वंस दे फॉर्म तो आप उसको ईजिली तोड़ नहीं सकते हो, ब्रेक नहीं कर सकते हो, फाइन। जबकि मिक्सचर को इजीली यू कैन सेपरेट, ठीक है। अभी वाटर अगर मैं दे दूँ आपको एंड आई विल से कि जस्ट सेपरेट द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फ्रॉम दैट, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू नाउ, ओके। हाँ, केमिकली आप बहुत सारी प्रोसेस के थ्रू आप उसे कर सकते हो, बट इट्स वेरी टाइम टेकिंग एंड इट्स अ वेरी huge process also, ठीक है। but if I will say I will give you a stone and I will mix something, if I will mix sand in it and if I will say to you that separate stone with the sand, definitely what you will do, you will use a sieve and you can easily separate them out, ठीक है। so mixture and compound में this is a major difference, that mixture क्या है आपके physically mixed होते हैं, but कंपाउंड क्या होते हैं आपके केमिकली मिक्सड होते हैं एंड दे आर नॉट इजीली सेपरेटेड टू ईच अदर, ओके। सो व्हाट आर अ कंपाउंड्स? कंपाउंड मीन्स कि व्हेन टू एंड मोर देन टू एलिमेंट्स आर कंबाइनिंग टू ईच अदर केमिकली, दे आर फॉर्मिंग अ प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड एज अ कंपाउंड, ठीक है। यू शुड नो अबाउट इट, ठीक है। और एग्जाम्पल जो इसमें आपको दिया है ऑलरेडी यू डन इन द प्रीवियस क्लासेस लाइक 6 to 8 में भी किया होगा आपने। what we have done, see, we have taken the iron and the sulfur, okay, we mix iron and sulfur is a powder which is yellow in color, you know it now. and what we are doing, when we mix them, ठीक है, when we mix them, so what we are doing, when we are bringing the magnet near to that, so you know it now that magnet attract each particle of iron and sulfur remain on the china dish, ठीक है। तो that is a physical process, but when you heat that, ठीक है, आपने अब क्या किया, इसको आपने हीट कर दिया, फाइन। अब हीट करने पे क्या हो जाएगा, इट फॉर्म आयरन सल्फाइड। अब नाउ व्हेन यू विल ब्रिंग द मैग्नेट नियर टू द चाइना डिश, तो फिर वो आयरन उस पर नहीं अट्रैक्ट होगा, मतलब जो मैग्नेट है दैट विल नॉट बी एबल टू अट्रैक्ट दिस आयरन नाउ बिकॉज व्हेन वी हीट दैम, so this iron react with the sulfur and they form a chemical compound that is called as iron sulfide, ठीक है। and iron sulfide आपका chemical compound है, तो that was not be easily separated, ठीक है। so this is the physical mixture and this is the compound. तो you should know that compounds क्या होते हैं, they are the chemical mixtures होते हैं which we are not able to separate, ठीक है, chemically combined होते हैं। and when we are talking about the mixture, they are physically combined, okay। so in the next session we will discuss about that, we will discuss about the difference between a mixture and a compound. so what will be what is your today's work? so today's work is that you have to write the definition of metalloids and compound, and yesterday you already have discussed, you already have done the properties of a metal and non-metal, so that is your work of today.